Hey everyone and welcome back to a new video. तो फिर इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं हाउ कैन यू रन n8n कम्प्लीटली फॉर फ्री. सो फॉर मोस्ट ऑफ यू आपको नहीं पता होगा कि आप लोग n8n को फ्री में भी रन कर सकते हो, राइट? आपको बस एक ही मिनट पता होगा कि यू कैन गो ऑन देयर वेबसाइट एंड देन यू कैन यूज़ अ 14 days ट्रायल एंड देन यू हैव टू पे एज यू गो प्लान, राइट? वैसे तो हमारे पास 3 तरीके हैं. इस वीडियो में हम लोग सबको सीखने वाले हैं कि हाउ कैन यू सेट अप योर n8n लोकली एंड दिस थिंग विल बी डन यूजिंग डॉकर. ओके, तो मैं बताऊंगा हर एक चीज़ रीज़न के साथ कि हम डॉकर ही क्यों यूज़ कर रहे हैं. इसमें मैं थोड़ा टेक्निकल पार्ट में भी जाना चाहूँगा बिकॉज आई एम अ टेक्निकल गाय. सो you'll get to know everything in this video itself. Okay, so let us see things one by one, how do things work, and then we can move on to the solution. Okay then, so now we are in my screen. We can see that what's n8n. Okay, so if most of you who don't know n8n is an AI workflow automation platform. You can basically automate your tasks, you can connect APIs. It's basically no code or low code tool which many people who don't even know coding can use. Okay, so it's like Zapier but it's open source. Okay, so what's the problem with n8n? So the problem is that हमको एक क्लाउड वर्जन मिलता है. इट्स काइंड ऑफ लिमिटेड एंड यू हैव टू पे एज यू गो, राइट? वो 14 days के बाद आपका अकाउंट एग्जॉस्ट हो जाता है एंड यू हैव टू मेक अनदर अकाउंट एंड देन इट्स काइंड ऑफ इरिटेटिंग क्योंकि आपका जो प्रोग्रेस होता है इस अकाउंट में इट गेट्स लॉस्ट. सो यू हैव टू मेक अ न्यू अकाउंट एंड या दैट्स द प्रॉब्लम. ओके, सो इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए व्हाट कैन वी डू? वी कैन सेल्फ होस्ट लोकली यूजिंग डॉकर, राइट? अब डॉकर इसमें क्यों यूज़ कर रहे हैं? बिकॉज Docker will help you create a virtual environment. आपके कंप्यूटर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, डिपेंडेंसीज एंड ऑल, एंड यू कैन रन द थिंग इन योर कंप्यूटर सेफली. तो एक एक करके हम चीज़ों को देखते हैं हाउ विल दे वर्क, राइट? सो पहले मैं बताता हूँ कि ऑप्शन क्या था अपने पास. यू हैड टू बेसिकली गो ओवर हियर, गेट स्टार्टेड एंड देन इट विल टेल यू टू रजिस्टर यूजिंग सम ईमेल. दिस इज माई ईमेल. तो यहाँ पे एक वेरिफिकेशन कोड आएगा एंड देन यू हैव टू साइन अप विद देम एंड देन यू कैन यूज़ n8n easily, right? तो what I'm going to show is that, so how are we gonna do this using docker? पहले आप docker की वेबसाइट में आएंगे, docker.com/products/docker-desktop. ओके, ये लिंक है, I'll put this in this description. तो यहाँ पे आप आना, डाउनलोड डॉकर डेस्कटॉप. मेरा मैक है तो फिर मैं डाउनलोड फॉर मैक एप्पल सिलिकॉन करूँगा. अगर आपका इंटेल चिप है तो आप उसके लिए ये डाउनलोड करना. बाकी अगर आप विंडोज़ वाले तो यू कैन चूज़ एनी ऑफ द ऑप्शन अकॉर्डिंग टू योर विंडो वर्जन. ओके, तो यू कैन डाउनलोड दिस. सो मेरे पास डॉकर पहले से पड़ा हुआ है इसलिए मैं आपको सीधा डॉकर पर लेके चलता हूँ. ये रहा मेरा डॉकर एंड आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है. यू कैन सर्च n8n, राइट? एंड आपको इस पुल बटन पे क्लिक करना है, राइट? या इफ़ यू ऑलरेडी हैव सम n8n इमेज, just make sure that it is your latest version and then you can simply click on run. Okay, this is your n8n image. You can just simply click on run. आपको ये प्ले बटन दिख रहा होगा, you can just simply click on run. यहाँ पे आपका एक कंटेनर बन जाएगा. तो मेरा यहाँ पे एक कंटेनर बना हुआ है n8n करके. ओके, अभी के लिए स्टॉप्ड है, ठीक है? वी कैन जस्ट क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन. ओके, सो फॉर मोस्ट ऑफ यू हु आर न्यू, मैं एक बार आपको सामने करके दिखा देता हूँ. यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन रन. इन दिस ऑप्शनल सेटिंग यू हैव टू टाइप द कंटेनर नेम n8n and then you can choose a port. It's easy, 5 6 7 8 and then you have to enter a volume जहाँ पे आपकी सारी it will be there. तो यहाँ पे मैं चूज़ कर लेता हूँ you can choose any folder. जैसे यहाँ पे I can choose maybe DevOps part. You can choose this path. In the container path you need to type /home/node/.n8n and then you simply have to click on run. This will create an image, right? मैं आपको सामने इसको करके दिखाता हूँ एक बारी. So okay, there's a conflict because okay, just a second, there is a conflict because मेरा already एक image बना हुआ है, so it won't run. So this is expected error. यहाँ पे आपको एक कंटेनर बन जाएगा and you have to just click on this run. मेरा यहाँ पे already run कर रहा है, मैंने आपको दिखाया था आपके सामने. तो now what you have to do, you can just go on localhost 5678 and here we go. Okay, this thing will work. Okay, now so this thing will work. It will first of all tell you to create a new account and then you have to just enter your email. There is no cost. You will get a verification code in your Gmail. You just have to put the detail in your n8n thing and this will work like a charm, right? So ये आपको दिखेगा, आपका यहाँ पे दिखेगा /home/workflow. यहाँ पे मैंने workflow बना रखे हैं थोड़े बहुत and yeah, I was learning n8n so I just made some of the workflow. Yeah, simple workflows हैं यहाँ पे. So yeah, you can also try them out and then now I want to discuss some of the parts with you. So we have 3 options over here. एक ऑप्शन है कि आप n8n का क्लाउड वर्जन यूज़ कर सकते हो जिसमें दे प्रोवाइड यू इजी सेटअप, ज़्यादा झंझट नहीं होता है एंड बट एक दिक्कत है कि इट्स पेड आफ्टर ट्रायल. सो दैट्स द लिमिटेशन ऑफ दिस थिंग. बट लोकली कोई भी लिमिटेशन नहीं होता. यू कैन बिल्ड वट एवर यू वॉन्ट टू बिल्ड. देयर इज़ नो टाइम कंस्ट्रेंट
for you as such. You can run this, it's very easy. Just आपको docker पे जाना है, docker पे आपको एक container run करना है, and yeah, you are good to go. And then another option is that you can self host your n8n on cloud, maybe on any AWS or in any VPS like Hostinger या फिर GCP वगैरह. It's kind of scalable, but you need a bit of knowledge of DevOps, like how can you create a EC2 instance, etc etc. And option 2 इस वीडियो में मैंने बता रखा है. So it's best for learning and testing, and the only limitation is that it's just limited on your machine. You just have to keep your machine on in order to run the n8n locally. It's free and it's limitless. You can build whatever you want to build. So now you know how to host n8n locally and run it for free, right? So if you like the video, then do consider giving a like and subscribe the channel for more such content. And yeah, I'll be there for you. If you have any doubts, then just DM me on LinkedIn or maybe Instagram. I'll be there for you guys. And yeah, let's stay connected. Thank you.